हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर्स। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर सर्किट जहां पर Zi इज द इनपुट इम्पिडेंस, Z0 इज द आउटपुट इम्पिडेंस, RL इज द लोड रेजिस्टेंस एंड Vs इज द इनपुट वोल्टेज। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सम डिफरेंट पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। तो सबसे पहला पैरामीटर है हमारा करंट गेन which is denoted by AI. So AI is equal to output current by input current. अब यहाँ पे हम सर्किट में देख सकते हैं that the output current is equal to IL and the input current is equal to I1. अब यहाँ पे one more thing to notice is that I2 is flowing in the opposite direction compared to IL. So IL can be written as minus I2. So our formula is going to be equal to minus I2 by I1. अब यहाँ से हम लोग V2 वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, which is going to be equal to IL times RL, and we know that IL is equal to minus I2, so V2 is equal to minus I2 times RL. अब we have seen these two equations in our previous video. तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा इक्वेशन 4 which is I2 is equal to HF I1 plus H0 times V2. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे that we are going to put the value of V2 which is equal to minus I2 RL. Now after this we are going to add H0 I2 RL in both sides. So we are going to have the equation as I2 plus H0 I2 RL is equal to HF I1. अब यहाँ से हम लोग I2 को कॉमन निकाल सकते हैं and we are going to get the value of I2 as HF I1 by 1 plus H0 RL. अब हमें निकालनी है value of our current gain. So we know that the formula is equal to minus I2 by I1. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, we are going to multiply minus 1 by I1 in both sides. So we will get the equation as minus I2 by I1 is equal to minus HF by 1 plus H0 RL. And we know that this particular parameter is going to be equal to current gain. So AI is equal to minus HF by 1 plus H0 RL. अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड पैरामीटर की which is voltage gain. So that is going to be equal to output voltage by input voltage. And we know that in a circuit the output voltage is V2 and the input voltage is V1. अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल V2 की वैल्यू को पुट कर देंगे which is equal to minus I2 RL by V1. Now we know that current gain is equal to minus I2 by I1. तो यहाँ से हम लोग minus I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं which is equal to I1 times AI. तो यहाँ पे हम लोग उस चीज को रिप्लेस कर देंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय I1. तो यहाँ पे न्यूमरेटर से हमारा I1 हट जाएगा and V1 by I1 we know that it is equal to input impedance, so that can be represented by Zi. अब हमें पता है that AI is equal to minus HF by 1 plus H0 RL and we know that input impedance का फॉर्मूला होता है ये that is HI minus HR HF by 1 by RL plus H0 and ये हम लोग अभी derive करेंगे भी. So we can just put these values in a formula and from that we are going to get the value of voltage gain which is equal to minus HF RL by HI plus HI H0 minus HR HF times RL. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग डेल्टा H मानेंगे. सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन एज minus HF RL by HI plus delta H times RL. Now we have a next parameter that is our power gain. So that is equal to AV times AI. अब हमें दोनों के एक्सप्रेशंस पता है, so we can just directly put them and we are going to get the value as HF square RL by HI plus delta H RL 1 plus H0 RL. Now the next parameter that we have to calculate is our input impedance. So we know that हमारा जो input voltage है that is going to be equal to I1 into Zi. So from here we can get the value of Zi as V1 by I1. अब ये दो equations हम लोग already देख चुके हैं ना previous videos. So from here we are going to take the third equation, so that is V1 is equal to HI I1 plus HR V2. अब यहाँ पे हम लोग V2 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं that is equal to minus I2 RL. उसके बाद we are going to divide both sides by I1. So V1 by I1 is equal to HI minus HR I2 by I1 times RL. Now we know that minus I2 by I1 is equal to हमारा current gain. तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा V1 by I1 is equal to HI plus HR times AI RL. अब इसके बाद
we can just put the value of AI that we have already derived in our previous slides, and after that we are going to get the value of input impedance as HI minus HRHF by 1 by RL plus H naught. The next parameter that we have to calculate is the output impedance. So output impedance is equal to V2 by I2. Now we are going to use the fourth equation here, and the equation is I2 is equal to HF I1 plus H naught V2. अब आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए हमें इस पर्टिकुलर सर्किट में Vs को जीरो करना पड़ेगा एंड लोड रेजिस्टेंस को इन्फिनाइट करना पड़ेगा. दैट मीन्स हमें इस पर्टिकुलर पार्ट को ओपन सर्किट करना होगा एंड इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हमें शॉर्ट सर्किट करना होगा to calculate our output impedance. So from here we get the value of Z0 as V2 by HF I1 plus H naught V2. अब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL in the input part of the circuit and from that we are going to get this particular equation and यहाँ से हम लोग I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं which is equal to minus HRV2 by RS plus HI. अब यहाँ पे जो I1 की वैल्यू आई है, we are going to put that value in this particular part and from here we are going to get the value of output impedance which is equal to RS plus HI by H naught HI minus HF HR plus H naught RS, and we know that this particular expression is equal to delta H, so we can get the value of output impedance which is equal to RS plus HI by delta H plus H naught RS. So that was all for this video and I will see you in the next one.